मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं मेरे लिए और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आए हैं, सो आई वाज लाइक रियली हैप्पी क्योंकि आइडियली ऑब्वियसली व्हेन आई वाज नरेटेड द स्क्रिप्ट पैरेलल था इक्वल, बहुत सारे सीन्स थे जो ऑब्वियसली हम लोग ओवर द टाइम जो अनइम्पॉर्टेंट सीन होते हैं या फिर थोड़ा और क्रिस्प करने के लिए हम लोग उसको मतलब शॉर्ट कर देते हैं, which is extremely important for the film. So I'm really happy कि in spite of having a limited role, I've done really well. People are liking my expressions, my look, my feel, and the chemistry with my actor and stuff like that. So I'm really happy. In fact, I've been seeing the film in a lot of theaters, and there are many people who have just come up to me and spoken to me that आपने इतना अच्छा काम किया, you like you're a fresh face and you're a very good surprise. In fact, even in the reviews they've said that you're a pleasant surprise and stuff like that. But the only thing is they were saying कि second half was a little dragging because of too much of stalking or obsession or whatever. But then that is obviously the filmmakers call how they want to show it. There were some people who were asking me कि when Urvil is not at home, he's not coming home, why don't you कॉल हिम, और आप उसके फ्रेंड्स को क्यों नहीं कॉल कर रही थी पूछने के लिए वो कहाँ पे है या किधर है, दैट इंटेंसिटी वॉज लैगिंग एंड स्टफ. आई वॉज जस्ट वंडरिंग दैट ओके आई डोंट नो, आई मीन what we think from the film's point of view, that's what the filmmakers put. I mean, it's not my decision, so I had to make them understand because I think our performances were so real that they actually believe that so and so things are happening. When I never knew there's a camera and stuff, even I had that impression. Okay, film, it's like there are some real acts which people go and capture and stuff like that. But even I, as an audience, I feel that the drama, थोड़ा सा और drama होता तो it would have been a little more intensified, a little more where Urvil is calling Sunny and trying to get in touch, and even Simran is calling Urvil like where are you and all these things. So it would have just the guilt conscious coming up. It would have just added a little bit drama. But I'm really happy कि whatever scenes I had and the entire role I portrayed, उसमें people have found me very powerful and they really liked my the way I've revealed each and every scene. So I'm really glad. In fact, there is this scene jo it's not there in the film now because I think they wanted to shorten it or make it more crisp. This was when do you remember that scene where जहाँ पे तो उर्विल जाता है सेलिना को मिलने के लिए in a restaurant, and before that घर पे क्या होता है, he dresses up wearing his tie and stuff like that, और मैं उसको जाके से वैसे ही सजाती हूँ और बोलती हूँ क्या बात है आप डेट पे जा रहे हो क्या, तो he just snaps at me and I'm like this is not a normal reaction, he's been just behaving very abnormally day by day. So that worry and phone calls, I think even as an audience I feel that could have added intensity, but then overall people have really loved the film, so I'm really happy. Okay, Nyra, any uncanny incident did you face during the film? Any uncanny incident? uh See, time constraints and all are always there. We always had to really be ready all the time, और लाइट जा रही है या फिर टाइम कंस्ट्रेंट है या फिर इतने बजे तक ही डेडलाइन मिला है, परमिशन इतना बजे तक ही मिला है, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है. बट आई मीन देर इज़ नो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसा. द ओनली पॉइंट इज़ मुझे टेक्स देने का मौका बहुत कम मिलता था. So I think if there was sufficient time or sufficient concentration given, maybe even I could have enhanced my performance. In fact, I personally feel that when I'm a person who has, I had a job and I married a guy whom I loved, basically I am strong in my own right. So itna bhi doormat hona, I mean, I choose to be like that because I want to give all my love and affection and time to my husband. I do have my favorite pastime, cooking and baking and stuff like that. I do take cooking orders and stuff to keep myself busy, but I should have been a little more aggressive ki like where is my husband, kidhar hai wo, and why is he behaving so weird. It's out of worry and I should have used that worry a little more. I think audience would have really loved that intense part. Exactly. Because that's what a lot of people have come and told me, like while you were not there when Urvil was not there for 2 days and stuff like that. I said okay, that didn't strike me. Or probably we cannot interfere in the filmmaker's job, so
So can I tell us insiders versus outsiders? तो पार्शियलिटी कहीं रहती है ऑफ कैमरा, जिस तरीके से आपने काम किया फिल्म में उस तरीके से वो दिखा नहीं पाए, तो कितना अफसोस है इस बात का, और क्या फील कर पा रही है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सभी लोगों ने आपको एक ही कमेंट्स दिए, अच्छे कमेंट्स दिए कि नेचुरल एक्टिंग, सिर्फ अच्छे कमेंट्स ही दिए. आई वाज लाइक सो हैप्पी. वेल सी, मैं ऐसा एक इनसिक्योरिटी लेके आऊँगी तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ शायद बाकी लोगों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा. आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, विच आई वॉज. I mean, I didn't know that an important scene like that will be chopped off, or maybe they should have. I feel it's my point of view. Ki maybe we could have intensified the second half a little more. But the thing is, as long as I'm confident about myself, as long as I have given my 100%, yes, insiders का जो है, they get more opportunities. Probably they get more chances because they are somebody's son, daughter, or whatever. We definitely have to work much harder to prove ourselves. But at the end, I hope it's all about talent, and obviously opportunities हम लोगों को कम मिलती है, but that is the point where we have to give our best and make it. If I ask you very straightforward, who is responsible for that? जो आपको लगता है कि कहीं से जो गलती कुछ हुई है, तो कौन है वो, अगर आप बताना चाहें तो. About what exactly? जो आपके सीन्स जो डायरेक्ट किए गए हैं, निकाले गए हैं, और जो आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए थे, वो नहीं है फिल्म में, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है फिल्म इस चीज़ को लेके. मैं एक्चुअली वो इंसान नहीं हूँ जो ये जज करे कि वो सीन. ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस कि अगर थोड़ी इंटेंसिटी होती तो मज़ा आता, क्योंकि सब लोग ने बोला है कि एवरीबडी हैज सेड दैट द स्टॉकिंग पार्ट वाज अ लिटिल मोर ड्रैगिंग. उस टाइम पे हम लोग को बिल्डअप की ज़रूरत थी, और मुझे भी जब मैंने भी पिक्चर इतने बार देखी तब मेरे को भी लगा कि हाँ ज़रूरत थी, क्योंकि लॉजिकली बात तो सही है कि मैं क्यों नहीं कॉल कर रही हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है कि एज अ वाइफ मेरा हस्बैंड कहाँ पे है, दारू पी के कहाँ पे जाता है, उसके दोस्त को मैं फ़ोन करके क्यों नहीं पूछती हूँ, या फिर डिनर टेबल पे बैठ के उसका वेट क्यों नहीं करती हूँ, शायद उसका ऑफिस ही क्यों नहीं ड्रॉप बाय करती हूँ देखने के लिए कि वो है किधर, जिंदा है कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है उसका. आई फील दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू एड ऑन टू इंटेंसिटी एंड to basically show more drama which was needed at that point of time, क्योंकि a lot of people came and told me कि आपका सिर्फ एक आपने सुना कि सेलिना है, एक वन नाइट स्टैंड आपने सुना और आपने डिवोर्स दे दिया. कुछ देर आर नो सीरीज़ लाइक सेलिना की तरफ वो बार बार घर जाता है, उसको कॉल करता है. एक सीरीज़ था जहाँ पे वो फेड अप होके बोलती है हाँ ठीक है मिलो, और तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले, मैं खुद जाकर बोलती हूँ. ऑन द सेम साइड दिस साइड इट वॉजंट देयर. So yes, I realized it after a lot of people told me that कि हाँ करेक्ट बात है कि यहाँ पे एज अ वाइफ आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट इंक्वायरिंग, आई एम नॉट फिगरिंग आउट वेयर इज माई हस्बैंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम. इज देयर जस्ट वन सीन वेयर आई आस्क हिम दैट यू नो आई एम द नेचर इज ऑफ सिमरन इज सच कि वो झगड़ा नहीं करती है, शी इज़ नॉट वेरी अथॉरिटेटिव. वो बहुत ही सटल वे में पूछती है कि हमारे बीच में इतना कुछ ओपन था, वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अभी क्या हो गया है, इट्स लुक्स लाइक you've just changed. But over the days when he behaves abnormal over and over again, as a wife rightfully I should have been more active and asked कि what is wrong and figure out where he is, क्यों नहीं घर आ रहा है, या फिर क्या है. उसके दोस्तों को पूछना. David was our common friend, I could have probably made a call to him. So yes, I did realize all these things after watching the film, and after a lot of people came and told me about that. Obviously, friends and relatives are the only one who will openly and honestly tell you, give you your honest feedback. So, but as long as film has been appreciated, the thing has been appreciated, my role has been appreciated, I'm okay with it. It could have been much better, I feel. Don't you think कि अगर किसका पार्ट ज़्यादा रहेगा, कौन ज़्यादा दिखाया जाएगा, इसकी बजाय अगर काम किया जाए कहानी कैसी होनी चाहिए, डोंट यू थिंक कि तब ज़्यादा चीज़ अच्छी निकल. That's what I'm trying to tell you कि हमने दिखाया कि ओके चेजिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट अगर हम लोग स्टोरी में थोड़ा और
उसको लाइक एवरीवेयर इन द रिव्यूज़ ऑल्सो इट इज़ रिटन कि हम लोगों ने एक बोल्ड स्टेप में पैर तो रख दिया है, एक अप्रोच तो लिया है, उसको अच्छी तरह से हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, हम लोगों ने स्किन शो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को मायने दी है. ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव, बट एक कैरेक्टराइजेशन का जो पोर्ट्रेयल है वो अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता, थोड़ा और इंटेंसिफाइड होता तो स्टोरी इज़ अमेजिंग, वो रिफ्लेक्ट करता. इवन आई फील दैट. So, but then it's not our, it's not in our hands at the end. So, जो decision लेते हैं या फिर जो बनाते हैं, they know it best. है ना, आफ्टर डूइंग दिस फिल्म क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगी अगली फिल्म साइन करने पर? I think I'll have to have, see narration में तो बहुत कुछ बोलते हैं. हम लोग उसके बलबूते पे फिल्म साइन करते हैं, लेकिन जब आपको फाइनल ड्राफ्ट दिया जाता है, यू नो, आफ्टर वेरियस करेक्शंस और यू नो लॉट ऑफ द मोस्ट रीसेंट ड्राफ्ट जो होता है उस पर हम लोग जब काम करते हैं, आई थिंक इफ़ वी स्टिक टू दैट, इट इज़ व्हेन वी बिलीव कि हम लोग अपना 100% दे सकते हैं. इनफैक्ट एज एन एक्टर भी हमको पता चलना चाहिए कि क्या सीन इम्पॉर्टेंट है और क्या सीन इम्पॉर्टेंट नहीं है. इनफैक्ट इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट सीन था जहाँ पे ये आपको वो सीन याद है जहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके वो सेलिना को मिलने जाता है एंड शी थ्रोज वाटर ऑन हिज फेस की लाइक यू नो एक रात की कहानी थी, वाई यू गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू इट. उसी के पहले एक बिल्डअप सीन था जहाँ पे वो तैयार हो रहा है घर पे और मैं उसको उसका टाई वाई ठीक करती हूँ और पूछती हूँ कि हॉट लग रहे हो बड़े, किसी डेट पे जा रहे हो क्या, मजाक में. बट ही शक्स मी ऑफ और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हो क्या गया है उर्विल को, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी. एक छोटे छोटे नुआंसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो आई थिंक कॉन्स्टेंटली मुझे अपने फिल्म मेकर्स के साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि ये होगा या निकाल दिया जाएगा या व्हाट इज़ द पॉइंट. आई थिंक क्योंकि मैं अपना सारा सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, आई जस्ट डू माई जॉब एंड गेट आउट, यू नो. आई एम अ कंप्लीट डायरेक्टर्स एक्टर बेसिकली. मुझे जितना बोला जाता है मैं उतना करके ये हो जाती हूँ. आई थिंक आई विल बी अ लिटिल मोर कॉशियस एंड बिकॉज इट्स नॉट about my film or my role, it's about the film in totality. अगर सेकेंड हाफ जैसे सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अगर और बिल्डअप होता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो फिल्म अच्छी तरह से और अच्छी तरह चलती. एंड आई मीन शायद सुपर हिट भी हो सकती थी, यू नो, बिकॉज ऑफ स्मॉल थिंग्स. आप जब इतना मेहनत कर रहे हो, एक साल पूरा जाता है इस पे काम करने के लिए, हम लोग अपने रोल्स पे इतनी मेहनत करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट नुआंस है स्टोरी के लिए अगर वही पिक्चर में ना रहे तो फिल्म फॉल्स फ्लैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग टू योर फिल्म मेकर्स एंड having that engaged as an audience, because they'll always think from the marketing point of view, a bigger star or a bigger name to associate them, showing more of it. But the point is, it always boils down to the content of the story.